स्वागत है तुम्हारा। आज खुलेंगे मैथ्स का पिटा, बजाएंगे रैशनलाइजेशन का टोलर। मैं हूं अमित मोदक। Yes, students, we are going to discuss about rationalizations. But before that, as the festive season is going on, so a very happy Navratra to all. Wish you all and your family a very prosperous and blissful, happy Durga Puja. Yes. So students, yes, what I was saying that we are discussing about that rationalization. We will be talking about rationalization. What is this rationalization? How it helps us in solving the questions, and this would be of your grade 7 and 8. So students, a very important thing is if you have not subscribed the channel, that is Vedantu Olympiad School or Vedantu Young Wonders, then do it right now. You never know, you may miss the very important questions. You may miss the very important concept. So subscribe it so that, and also press the bell icon so that you get all the notifications. So students, without much delay, let's get started with first rationalization. Now rationalization, do you think it's very important? Yes, it's very important. It makes our solving the questions very easy. ये questions को बनाने में बहुत आसान कर देता है. कब? When we talk about different type of numbers. Okay, when we will come across a particular kind of numbers that's called irrational numbers, then it becomes very helpful. So let's understand first a little bit idea about the number system, and then we'll go what the process, what we do in rationalization. ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं real numbers. Real numbers can be defined as the union of both rational and irrational numbers. तो real numbers क्या होते हैं? It's a union, दो चीजों का जोड़. किन चीजों का? एक रैशनल और एक इरैशनल. अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? So these rational and irrational numbers, they can be positive, negative and this real number. Okay, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को रियल नंबर कहते हैं and it's being denoted by letter R. अब ये रैशनल क्या है? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं that can be represented in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. P by Q मतलब हम लोग एक फॉर्म में लिख सकते हैं जहां हमारा एक न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो. ठीक है, सो P बाय Q फॉर्म लिख सकते हैं जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं. ओके, और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ P बाय Q. जैसे हमारा √3, ये हमारा P बाई Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. इट्स कॉल्ड एज इरैशनल नंबर. ठीक है, अब ये जो हमारा रियल नंबर्स जिनके बारे में बात करेंगे, रियल नंबर्स एक बहुत बड़ा है ना, एक बहुत बड़ा चीज को अपने अंदर समाये हुए है, क्योंकि इसके अंदर रैशनल्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर इरैशनल्स भी आ जाते हैं. अगर हम लोग थोड़े रैशनल्स की बात करें तो रैशनल्स में हमारा दो काइंड आ जाता है. एक नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स, एक हो गया इंटीजर रैशनल नंबर. अब इंटीजर्स तो हो गए जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 1, 2, 3 सारे कुछ आ गए. ओके, और नेगेटिव वाले भी आ गए, -5, -6, -7, -8, -11, -3, क्योंकि उनको P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं. नॉन इंटीजर्स वाले क्या आ गए, जैसे डेसिमल वाले. अब मैं लिखूं कि 1.5 को P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 15/10 आ जाता है. ठीक, सो नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं और इंटीजर्स होते हैं. अब इंटीजर्स को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं नेगेटिव और होल. नेगेटिव में क्या, -1, -2 ये आ गए. होल में क्या हो जाएगा, 0 के साथ सारे नेचुरल नंबर्स. तो होल नंबर्स को फिर से क्लासिफाई किया गया 0 एंड नेचुरल नंबर्स. और इरैशनल नंबर्स क्या हो गए, जो एक अलग क्लास है जिसमें हम लोग बात करते हैं दैट इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, जैसे पाई, √3, √5 जो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है. ओके, √7, √11 ये सारे हो जाएंगे हमारे इरैशनल नंबर्स. तो यस, हमने यही डिस्कस किया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनको हम लोग n
से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जांपल्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर्स हो गए कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स जो हमारा WO से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो सच एज 0 1 2 3 4, ये सारे एग्जांपल हो गए। इंटीजर्स द कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स भी लेंगे। तो होल नंबर्स में जीरो से स्टार्ट होगा और फिर नेचुरल नंबर्स भी उसमें आ जाते हैं। अब इनमें जो स्मॉलेस्ट कहेंगे तो वो माइनस इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी कोई डिफाइन नहीं होता है, हम लोग बोलते हैं ह्यूज लार्ज नंबर, माइनस इंफिनिटी। पॉजिटिव साइड में कहेंगे पॉजिटिव इंफिनिटी। नेक्स्ट रैशनल नंबर्स, जैसे मैंने कहा कि नंबर्स जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू जीरो, और p एंड q जो होता है इंटीजर्स के फॉर्म में लिखते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देन एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स होता है 1 बाई 2, 5 बाई 4, 12 बाई 6, नेगेटिव वाले भी ले सकते हैं। इरैशनल्स, वैसे नंबर्स दैट कैन नॉट बी रैशनल, जिसका मतलब है कि p बाई q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, दे आर द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा है जो रुकता नहीं है, अगर उनको डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो वो रुकेंगे नहीं, जैसे 1.17396200737878117 कुछ भी चल रहा है, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुकेगा और ना ही रिपीट हो रहा है। ओके, जैसे रिपीट होने का, जैसे 1.23232323 इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, तो इसको हम लोग रैशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा है और साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा है। ओके, जैसे √2 हो गया, √2 को अगर हम लोग डेसिमल में लिखे तो 1.4144 चलता ही जाएगा, ये अलग अलग नंबर्स आते रहेंगे। सो दीज आर इरैशनल नंबर्स। ओके, अब कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज हैं। अगर हम लोग a एंड b को अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स मानते हैं, ओके, पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि अंडर रूट क्या है, अंदर हम लोग पॉजिटिव नंबर्स लेंगे तो ही वो रियल कहलाएगा। सो इनके कुछ आइडेंटिटीज है, जैसे अंडर रूट ए का होल स्क्वायर करेंगे तो a आएगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ओके, इस तरह से अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी इज इक्वल टू होल अंडर रूट ए बाई बी लिख सकते हैं। इसी तरह से आइडेंटिटीज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये देगा ए माइनस बी। ठीक है, उसी तरह से ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी देगा ए स्क्वायर माइनस बी। अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर गिव्स यू ए प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। तो ये बेसिकली ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर का एक ओवरऑल व्यू दे रखा है। एंड इसी तरह से अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, अगर हम लोग का दो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ सी प्लस डी, ठीक है, अंडर रूट के साथ, सो देन वी गेट अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। ठीक है, ओके, तो इतना चीजें समझने के बाद ये हमारा है कि रैशनलाइजेशन हमारा मेन मुद्दा था। बट आखिर रैशनलाइजेशन क्यों, रैशनलाइजेशन क्या जरूरत है, व्हाट डज इट डू? तो बेसिकली रैशनलाइजेशन जो है हमारे इरैशनल नंबर्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब इरैशनल्स को सॉल्व करना वेरी डिफिकल्ट, तो उनको क्या करते हैं, इरैशनल्स को कन्वर्ट किया जाता है रैशनल में। सो द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ अनदर इरैशनल नंबर। तो एक प्रोसेस है रैशनलाइजेशन जहां पे हम लोग इरैशनल नंबर को एक इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें आंसर जो मिले वो एक रैशनल नंबर मिल जाए। ओके, सो जनरली हम लोग डिनोमिनेटर्स जो होते हैं, डिनोमिनेटर्स को हम लोग इरैशनल में नहीं रखते हैं। सो जनरली वी ट्रांसफॉर्म द डिनोमिनेटर्स इनटू द रैशनल फॉर्म। ओके, डिनोमिनेटर्स को हम लोग इरैशनल से रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, बट हमेशा जनरली व्हाट वी डू इट। ओके, और आज के बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग यही देखेंगे। नाउ बोथ द इरैशनल नंबर्स जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से, उनको कहा जाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लेते हैं 4√2 है, क्योंकि हमें पता है √2 एक इरैशनल है, तो 4√2 एक इरैशनल नंबर। अब हमें ये कन्वर्ट करना है,
ठीक है, ये इस समय हमारे पास एक नंबर दे रखा है। अगर डिवाइड बाय देखा जाए तो डिवाइड में 1 है, बट हम लोग न्यूमरेटर के फॉर्म में ही समझते हैं। 4√2 को हमें कन्वर्ट करना है रैशनल के फॉर्म में। सो व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई 4√2 विद √2। तो √2 के मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, √2 इंटू √2 होता है 2। अब वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ एंड वी गेट अ रैशनल नंबर 8। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि √2 जो है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है RF, या फिर कह सकते हैं 4√2 √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ओके, तो एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हो जाते हैं जब दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करा जाए और उनको कन्वर्ट करा जाए रैशनल में। ओके, तो चलिए सो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/2 minus √3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/2 minus √3। अब यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, 5/2 minus √3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है क्योंकि न्यूमरेटर में तो वैसे भी 5 है। सो 2 minus √3 को रैशनलाइज कैसे करें। सो इसको रैशनलाइज करने के लिए व्हाट विल डू इज विल जस्ट मल्टीप्लाई इट। 5/2 minus √3 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन चेंज करके। किसका साइन चेंज करेंगे ना, दो यहाँ पे नंबर है 2 प्लस √3, माइनस अगर है हमारे पास तो इसका ऑपोजिट साइन लेंगे सो दैट वी कैन यूटिलाइज द आइडेंटिटी। अब जैसे ही प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3 होगा क्या कि वी गेट अ आइडेंटिटी हियर, जिस आइडेंटिटीज की बात कर रहे थे हम लोग। 2 minus √3 2 plus √3, तो ये a minus b a plus b समथिंग ऐसा कुछ बन रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो 2 स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। ऊपर एज इट इज 5 इंटू 2 प्लस √3 बाई 2 स्क्वायर इज 4, √3 का होल स्क्वायर होता है 3, so 4 minus 3 becomes 1, so ultimately this is the answer. Okay, so this is how we are transforming the denominator as irrational to rational by multiplying with another irrational number. Okay, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर क्यों ना इसको सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो होता क्या कि अगर इसे √3 से करते तो फिर से ये दोबारा ऐसा हो जाता, √3 इंटू 2 2√3 माइनस √3 इंटू √3 3, तो फिर से तो हमें एक इरैशनल ही मिल गया। सो हमारा मुद्दा तो ये नहीं था कि इरैशनल ही रखना है, नहीं, हमारा मोटो था कि इसे रैशनल में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम लोग 2 प्लस √3 से ऑलराइट। Alright students, so let's have the quiz round 1. So I will be asking the question, so let's have the first question on your screen. Here we have 6√5 into 6√5 is equal to what? Question number 1, 6√5 into 6√5 is equal to what? Your options are A, 36√5, 6 into 0√5, 6√5 and 12√5. What is going to be the correct answer of it? Quick, you can answer this in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Let's see the answer. Yes, the right answer is 6 into 6, that gives you 36, and root we have 5. Alright, let's move on to the next question. If x equal to under root 5 plus 2, then x minus 1 by x equals what? Will it be 2√5, 4, 2 or √5? Let's have the answer. Yes, you can write your answers in the chat box. Alright, so let's reveal the answer here. Right answer is 4. Right answer is, correct answer is 4. Okay, so let's discuss how we can do it. X is equal to under root 5 plus 2. Okay, and we have been asked x minus 1 by x. So let's first find out 1 by x. 1 by x is equal to 1 by under root 5 plus 2. Now we have to rationalize, as I said that if we have a irrational in the denominator part, we have to make it rational. So multiplying under root 5 minus 2, so on the numerator will get the same,
Now here a plus b, a minus b you can use. So under root 5 square, that's a square minus b square. Okay. So here it becomes under root 5 minus 2 by 5 minus 4. So that gives under root 5 minus 2 by 1. So therefore 1 by x value we got under root 5 minus 2. Alright. Now as per the question, x minus 1 by x, it should be under root 5 plus 2 minus under root 5 minus 2. So this cancels root 5 with root 5 and that gives 4 as correct answer. Alright. So let's move on to the next question here. Here comes your third question. If x equal to 2 upon 3 plus root 7, then x minus 3 whole square is equal to how much? Take your time, pause the video, solve it and get the answer. Alright, so let's see what the correct answer is. The correct answer is 70. Okay, how? Sure, let's discuss. X equal to 2 upon 3 plus root 7. Alright, now what is x minus 3 whole square? So let us first rationalize this part. Okay, so 3 minus root 7, as we can see the denominator part being having a irrational number. So 2 into 3 minus root 7 over 3 plus 7, 3 minus 7. So 3 square is 9 minus root 7 square is 7. So that gives 2 into 3 minus root 7 over 2. Right? 9 minus 7 is 2. 2 gets cancelled. So we get a x equal to 3 minus root 7. Now the question is x minus 3 whole square. Now we can use smartly here 3 minus root 7 minus 3 whole square. So that makes minus 3, positive 3 cancel out. So we get a minus 7 whole square. Now whole square means what? We always get a sign always positive, and root 7 whole square, it gives only 7, and that's what the correct answer is. Let's move on to the next question. 1 by under root 9 minus under root 8 is equal to how much? 1 by under root 9 minus under root 8 is equal to how much? Okay, students. So let's see the answer. The right answer is 3 plus 2 root 8. 2 root 2. How we can get? Let's solve it. 1 by under root 9 minus under root 8. We'll rationalize it. As we could see, so under root 9 plus under root 8, under root 9 plus under root 8. So that gives under root 9 plus under root 8 upon 9 under root 9 whole square, that gives 9. Under root 8 whole square, that gives 8. So it's very simple, under root 9 plus under root 8. But the answer is not there. We do not have any options. No, we do have the options. We have to think over. Root 9 is 3, right? 9 being a perfect square, it's 3. Plus under root 8. Now under root 8 basically is basically 2 into 2 into 2. So we can make a pair of 2. So that's what we get, 2 plus, 2 root 2. Alright, so this is the correct answer. Okay, so you are doing very fantastic, students. Let's move on to the next question. If x 5 minus root 3 upon 2 plus root 3 equal to x plus y root 3, then what is going to be the value of x and y? What's going to be the value of x and y? Okay, sure. Let's look into the answer. Answer is x equal to 13, y equal to minus 7. Okay, so every time you pause the video, solve it and then get the answer. Okay, and let's verify it. So as it says 5 minus root 3 upon 2 plus root 3. Okay, check. Let's change.
So we'll rationalize it, only the denominator part. Okay, let's rationalize the denominator part. 2 minus root 3, 2 minus root 3. So what we get? 5 minus root 3 into 2 minus root 3 upon, this becomes 2 square is 4 under root 3 whole square. So that gives 3. So that gives 5 minus root 3 and 2 minus root 3 by 1. Okay, but we do not have got the answer because we need to find the values of x and y. So let's expand it. 5 minus root 3, 2 minus root 3. Let's expand it. Okay, so 5 twos are. So what we'll do, 5 gets multiplied with first 2 minus root 3, then minus root 3 gets multiplied with 2 minus root 3. So let's see what we get. 5 twos are 10 minus 5 root 3 minus 2 root 3 plus 3. So that gives 13. 10 and 3 gets added. This 2 adds 7 root 3. Now on comparing, now check. 13 minus 7 root 3 gets compared with x plus y root 3. Now you check. X you are getting on comparing this and this. What do you get? 13. On comparing y, and on this side you have a minus 7. So that is what we get the correct answer as A. Alright. So very, very well done. Lovely. Very good. Let's have the quiz round 2. Have a sip of water and let's be calm and let's get started with quiz round 2. First question on your screen, here it is. The value of under root 3 minus 2 root 2. Very good question. Very good question. Think over it. How you can get the answer of this. The value of under root 3 minus 2 root 2. Take a pause on the video, solve it, and get back with your answers. Alright, so let's see the answer. A, that's root 2 minus 1. Okay, how come this answer? Let's look with another. Yes, 3 minus 2 root 2. Now, from here, what we can do is, we can break down this 3. Okay, why we have breakdown? In order to have some formula, some identities formation. Okay, so what I can do is I can just add it 2 here. Okay, minus 2 root 2 plus 1. It will not affect the expression because 2 plus 1 obvious 3 minus 2 root 2, but it will give a huge impact. How? What we can do is root 2 square. I can write root 2 square as a 2 minus 2 root 2, okay, into 1 I can write, okay, or I am not also writing, that is also fine, and I can make this 1, okay. So what you can see here, it's A. You can make this as B, and this is becoming 2A into B. Now if I write 1 here now, so it becomes 2AB. Dot means multiply, it's not a decimal, it's multiply. 2AB, right? So it becomes what? Very simple now. A minus 2AB plus B square. That becomes A minus B whole square. And that is A is root 2 minus B. That is 1 whole square. Now this whole square gets cancelled with this root, as you all know. This square root means power 1 by 2. So that gets cancelled. So what we get answer as root 2 minus 1. So very well done if you have been able to solve it. Very nice. Very good. Let's move and have another question on our screen. If root 2 equal to 1.414, if root 2 equal to 414, then the value of root 6 minus root 3 up to 3 decimal places.
Okay, sure. So let's look into the solution part. 0.707. Okay, so let's look how we can do. As root 6 minus root 3, students, we can write this as root 3 into root 2, okay, minus root 3. Now root 3 can be taken as common, root 2 minus 1. Okay, if we take it a common, we can get root 2 minus 1. Now root 3 is 1.73. It's get multiplied with the root 2, value is 1.414. Okay, minus 1. Okay, minus 1. If somebody have a difficulty in finding out the root, square root of 3, so they can use the process of finding out square root. 3.0000 I can take. I can make the pairs like this. Okay, 1 ones are 1, that gives 2. 00 gets here, a decimal here. Now 1 plus 1 becomes 2. Okay, if I take 8, 28 into 8, 8 is just 64, 6, 8 to 16 plus 6, it becomes 22. Whereas if I take 27 into 7, 7 sevens are 49, carry 4, 7 twos are 14, 4, 18. So yes, we can take the 7 here. So it becomes 189. 10 minus 9 is 1, 9 minus 8 is 1. Once again, 2 zeros will get dropped down. 7 will come here. 7 plus 7 is 14, carry 1, 34. Now we'll take some number below, beside 4, so that it gets very close to it. Okay. Now once again, 33, 4, 3 threes are will try, and it will come very close to it. Okay, 3, 4, 3 threes are. 3 is a 9, 4 is a 12, carry 1. 3 is a 9, 1029. So that's why we get here 3 and 3 here, 1029. Now again, it's the process goes on. So this is how we get 732, and when we multiply with this 1.732 into 0.414, so ultimately we get our answer as 0.707. Okay, so this is how we can do this question. All right, so wonderful. Let's move on to the another one. Write the reciprocal of 5 plus root 2. Write the reciprocal of 5 plus root 2. Okay, try to solve it. Make a pause of the video and solve it. Okay, then let's look into the answer. 5 minus root 2 by 23. Now, most of you might be thinking that, sir, reciprocal means 1 upon, but we are not getting any option like 5 plus root 2. Yes, they haven't given. If they have given this, then we can just select this simply, but they have not given in this form. Let's rationalize it. So 5 minus root 2. Now you all are very smart. You can do it very quickly. 25 minus 2. That's 5 minus root 2 upon 23. Okay. 5 minus root 2 upon 23. Alright. Let's do another question. Okay. This is not a quiz. This is let's solve question. Okay, students. This is let's solve question. If x equal to 3 plus 2 root 2, then find the value of root x minus 1 by root x. If x equal to 3 plus root 2, then find the value of root x minus 1 upon root x. Try to solve it, students. Very nice question.
Okay, sure. So let's solve this. X is 3 plus 2 root 2. Okay, we have a x as 3 plus 2 root 2. Now what is our 1 by x? It would be 3 plus 2 root 2. If we rationalize it, 3 minus 2 root 2 by 3 minus 2 root 2. Now on rationalizing, what we get? 3 minus 2 root 2 by 3 square is 9 plus minus minus 2 root 2. 2 root 2 into 2 root 2. 2 2s are 4 into root 2 into root 2 is 2. So 4 2s are 8. Okay. So it gives 8. So ultimately what we get? 3 minus 2 root 2 because 9 minus 8 is 1. Alright. And we have been asked root x minus 1 by root x. But we have x and on this part we have 1 by x. Now what we can do is one thing, that root x minus 1 by root x, if we do the whole square of it, okay, if we do the whole square of it, all right, if we do the whole square of this, what we can get? We can get root x whole square is x minus 2 into a, 2 into a root x into b, that is 1 by root x plus 1 by root x whole square, that is 1 by x. Now this gets cancelled. Okay, this get cancelled. Now x plus 1 by x minus 2 we can write. Okay, we can write this part. Now what is the answer of x plus 1 by x? Now we can get, as we have got the value of x here, x plus 1 by x can be written as 3 plus 2 root 2 plus 3 minus 2 root 2. That gives 3, 3, 6. 3 plus 3, 6 we are getting. Now 6 we can place in place of x plus 1 by x. We can place x as 6 minus 2. That gives 4. Now 4 is the answer of our root x minus 1 by root x whole square is 4. So what is going to be the answer of x root x minus 1 by root x? That's square root of 4, that is 2. Okay, or we can say plus minus 2. Also we can say plus minus 2. Okay, if we have a positive 2 option, we can go with the 2. If we have a negative, we can go with that. Or if we have plus minus 2, that is also possible. Okay, so this we can solve in this way. All right, so next question. So this question, students, I am going to give you as a homework. Okay, I want you all to solve this question as a homework. Okay, so I want you people to solve this question and write the answers on the chat box. Okay, so I hope you enjoyed the session of rationalization. So once again, wish you a very, very happy Navratra. May God bless you. Goddess Durga, Goddess Durga fulfills your all dreams, bless you with all blessings, and fulfills all your wishes. Till then, meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care.